दो हमारे मॉक, और हम इन दोनों मॉक इंटरव्यूज के साथ साथ कोशिश करेंगे कि हम, अच्छा जी, अनम्यूट कर दें पार्टिसिपेंट्स को। इसके साथ हम कोशिश करेंगे कि कुछ जो है वो शेयर किया जा सके, और आप जो है रायमा साहिबा की तरफ से शो है देती हैं माइक को। अच्छा जी, सो पहले सेक्शन में हम क्या करेंगे, हम मॉक इंटरव्यू लेंगे, और उसके बाद जब दरमियान में जो है वहाँ पे हम थोड़ी देर के लिए रुकेंगे, then we will talk about the questions. We are going to discuss the questions at the end of the session, and then we will proceed further towards the second interview. So, Miss Alina Saftar, Miss Alina, you are requested to unmute yourself so that we may proceed further. Assalamu alaikum, sir. Walaikum assalam. Good evening, Miss Alina. How are you? Good evening, sir. Not fine. Okay, all right. So you are taking the pressure of interview and all the things like that. So you have your interview tomorrow. No, I am having mild fever right now. Okay. It's quite natural. I'm sure that you will not forget to take the Panadol. 1 or 2 Panadol, Yes, they're going to relieve you from this particular disease. Okay. Yes, So sir. what is the timing of your interview tomorrow? Sir, 9 a.m. in the morning. Okay. It is. All right. And the center is Lahore. Yes, sir. LDA. Okay. I'm sure you're going to leave for the central at 6 or 7 a.m., 6 a.m. You are from Lahore, right? No, sir. Yes, sir. I'm Okay, from so Lahore, so you just need 1 hour. You're yes, sir. supposed to be there around 8 or 8:15. Yes, sir. Okay, so without wasting any time, should we proceed further towards a formal discussion? Yes, sir. Okay, Yes, sir. all right. Okay, Miss Alina, starting from your introduction, please introduce yourself. So I am Alina Safdar, and I have done my master's from Queen Mary College, Lahore, affiliated with Punjab University. And before that, I did my graduation from the same university, that is Punjab University. And I completed my intermediate from Lahore board and did my matriculation from my hometown in Jhelum. And as far as my hobbies are concerned, my favorite pastime is reading fiction, especially Pakistani literature written in English. Queen Mary College is a very famous college. So when the Department of English was established in the Queen Mary College? Sir, I'm not, I tried to look for this detail, but there was no specific details about the department of, when the postgraduate department was built there. So I just find out the details of that when the college was built. It was built in 1907 as a Victoria May High School. And then in 1911, it was renamed as Queen Mary due to the in the honor of the Queen of George VII. All right. Yes. Okay, so you have mentioned that you are interested in Mohsin Hamid in the Pakistani fiction, but before that, I'm Yes, sir. interested in your hobbies. Okay, sir. What are your hobbies, Miss Alina? Sir, my hobby is reading fiction. Reading Okay. books, especially fiction. What is the definition of fiction, Miss Alina? Fiction is basically a piece of literature which is written in prose and having more than 50,000 words, and it has a plot and different characters there, and and it talks about the psychological and the development of the characters. Okay. As you have mentioned that fiction, reading fiction is your hobby. So I'm sure Yes, sir. that you know the different types of fictions. So how many types of fictions you are aware of? Sir, there are, it's mainly novel and short story. They fall in the category of fiction. And in the novel, there are further categories, like there is Bildungsroman novel, there are historical novel,
and there are epistolary novel, and Okay. Okay, all right. That's good. So why Mohsin Hamid and why Pakistani fiction? sir, actually, this Pakistani literature, it helps me understand the culture and the history of my own country and the people, my native people. So that is what appeals me. So indirectly, you are interested in post-colonial literature. Yes, sir. Okay. You can Okay. say. What is the definition of post-colonial literature, Ms. Alina? Sir, post-colonial literature basically refers to the literature which is written by the people who were once colonized. And What is the difference? What is the difference between cultural imperialism and migrant literature? cultural imperialism and Okay. Migrant literature. Is there any difference between the migrant literature and the post-colonial literature? Sorry, sir. Okay, no worries about that. No, sir. I didn't have any idea about it. Since you're interested in post-colonial literature, I'm sure that you have heard the name of Salman Rushdie and Amit Chaudhary. Yes, sir. I heard the name of Salman Rushdie. He is an Indian writer, and his work, which is satanic verses, it is also banned in the country, in our country, and in the Islamic countries because of its blasphemous content. Okay. Well, so Amit Chaudhary, have you read any novel of Amit Chaudhary? No, sir. Okay. You know, Amit Chaudhary is a very famous novelist, and he was even elected the Fellow of the Royal Society of Literature. So do you know what is Royal Society of Literature, Ms. Amina? Sir, Royal Society of Literature is it's basically it's located in the Britain. Oh yes, and when it was established, any idea about that? Royal Society. It's a wild guess. You can say that after the restoration period, I think it was there. Okay, so yes, it is a wild guess. Okay, talking about your favorite novelists, you have mentioned Mohsin Hamid, but once again, post-colonialism. So do you know the name Toni Morrison? Yes, sir. So Toni Morrison is a post-colonial writer? Yes, sir, she is. Okay, so name of the books of Toni Morrison's justifying and substantiating your claim? She has written the novel Jazz. Okay. And basically, she also talks about the Africans and their miseries who are living there in America. So the themes are similar with this particular the post-colonial literature. Okay, have you heard the name of Harold Morrison? Who was Harold Morrison? Sorry, sir. Okay, so like I am particularly like interested in the post-colonial literature more. Specifically, it's Pakistani literature, not the the whole range of literature which is okay. for the first time. So I'm sure that because you're interested in Pakistani literature, you are well aware of Train to Pakistan by Khushwant Singh. So he is also an Indian writer. So you're just interested in the Pakistani writers? Yes, sir. Okay. All right. So how many Pakistani writers you have covered so far? So I have covered almost 6 writers so far.
Like I have read Nadeem Aslam, his Maps for Lost Lovers, and of Atiya Hussain, Sunlight on a Broken Column, and of Bapsi Sidhwa, Ice Candy Man, and Okay. yes, sir. What's about the Crow Eaters by Bapsi Sidhwa? Sorry, sir, I haven't read it. Okay, so Crow Eater is a very famous novel, by the way. So you haven't read that. So for Mohsin Hamid, you have covered the Reluctant Fundamentalists. Yes, sir. The Reluctant Fundamentalist and Most Smoke, and How to Get Filthy Rich in Rising Asia and Exit West as well. That's great. So maybe your hobby should not be just the South Asian or the post-colonial literature. It should be the Mohsin Hamid only, like reading the books of Mohsin Hamid and Bapsi Sidhwa. Okay, so okay, we will discuss the things after the interview as well. Okay, But sir. this particular session is a part of your interview. Okay. Okay, sir. Well, talking about the reluctant fundamentalists, Yes. what is the relationship between the reluctant fundamentalist and a fanatic Pakistani person? So do you And believe we all are the fundamentalists, the fanatic Pakistani people? So yes, who sir. is fanatic, first of all? What is the definition of fanatic? And when we say fanatic Pakistani, what comes in your mind? It is when we say fanatic, so that is like the person is mostly rigid about the conventions and about the religion, and Who very believes at an things? extreme level. Okay, fair enough. So do you believe that we all Pakistani are the reluctant fundamentalists? Yes, sir. To some extent, we can say. Okay. Yeah, What is the definition of fundamentalist? What is fundamentalist? it is actually a person who is very possessive and very rigid about the conventions of the religion and the social and cultural values uh, of the society and the country to which he belongs. Okay. So do you believe कि पाकिस्तान के अंदर जो रहने वाले लोग हैं वो सारे के सारे फंडामेंटलिस्ट हैं? सर ऐसा तो नहीं कह सकते हम कि सारे के सारे हैं, बिकॉज कुछ लोग जो हैं वो फनेटिक भी हैं, कुछ जो हैं वो रिलेक्टेंट फंडामेंटलिस्ट भी हैं. अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि ये जो फंडामेंटलिस्ट हम कहते हैं और जब हम अर्बन और रूरल एरियाज की बात करते हैं, ज्यादा फंडामेंटलिज्म कहाँ पे आपको नजर आती है? शहरों में या देहातों में? देहातों एरिया में ज्यादा नजर आती है. रिलीजियस के साथ ज्यादा अटैचमेंट कहाँ पे नजर आती है? सिटीज में या विलेजेस में? सर विलेजेस में ज्यादा प्रोमिनेंट होते हैं. इस तरह के कल्चर्स के साथ ज्यादा एसोसिएट जो हैं वो कहाँ पे ज्यादा होते हैं, देहातों में या शहरों में? सर देहातों में ज्यादा. सो इस बेसिस पे क्या हम कह सकते हैं कि सारे देहाती जो हैं वो पाकिस्तान में रहने वाले वो सारे के सारे फंडामेंटलिस्ट हैं, रिलक्टेंट फंडामेंटलिस्ट हैं? हम सबको एक ही कैटेगरी में नहीं जो है वो शामिल कर सकते. Okay. Okay. So how do you see the character of Changiz when Changiz is telling the story? So what do you feel about Changiz? So Changiz is a flat character or is a round character? He is actually a round character because we see that his opinions about the America and all these things are they start getting changed with the passage of time. So he is a round character. What is the definition of a round character? Round character is actually that one who changes with the passage of time, with the passage of the story and with the progress of the plot. So the character changes. Okay. So Changiz is narrating the story and the person is writing down all the things. Changiz been in a university, the Princeton University.
So he was doing what? What is the name of the degree that he completed from Princeton University? So it was related to the business university, related to the degree of business and Okay. economics. How do you see the reaction of United States of America after 9/11? Do you believe the policy adopted by the United States of America is justified? As far as the policy is concerned, so it is not justified because it is against the claim which the United States does, that all the people which are living there, they are treated equally and regardless of their country and their race. But after the 9/11 attack, we see that the Pakistan, the Muslims which are living there, so on the basis of their beard, on the basis of their physical appearance and their color, so they are treated as the terrorist, no matter how, from which privileged class they belong, and they are enjoying the high uh, prestige in the country in the US. And the same case happens with the Changiz. So it is not justified, and this is what makes Changiz annoy, and he uh, starts thinking the failure of Cool. the. All right. Fair enough. Talking about some simple questions, Miss Alina, like leave the literature thing. Can you spell out what, like, how do you spell rhythm? What are the spellings of the rhythm? RHYTHM. Okay, cigarette, Sorry. cigarette, cigarette. CIGRATTE. Are you sure about that? Okay, maybe Yes, you sir. need to rethink. Maybe you Yes. want to take another chance. Okay, Liaison, Sorry. liaison, liaison, liaison. LAISN. Sorry, sir. I am unable to catch the Weird, pronunciation. weird. VEIRED. Sorry, WEIRD. Okay, fair enough. So how you're going to teach the spellings to the students in your class? What do you feel about the most effective strategy? It is by using the flashcards. It is also an effective strategy to teach the spellings, and by the Okay, the behaviorist, they like the theory. I okay. will follow that. How, Like that, there is how, the repetition due to the. okay. How many teaching methods you can utilize in a single classroom? I can utilize 2 to 3 methods, and which is like the teacher-centered method. There is a learner-centered method, and Mm-hmm. I can utilize both of them at the same time. Okay. When we are talking about the learner-centered method, what is Yes. this method after all? So actually, it is this method makes the learner active participant in the class, and the teacher is not acting as an active speaker, and the students are just listening. So in this case, the students are also encouraged to participate in the discussion. Mhm. Okay, This all is right, why makes them effective method. fair enough. Coming back to the literature portion and talking about your favorite writer, what is the name of the favorite writer, the writer that you have prepared? So again, it was Mohsen Hamid, but we No, poet, poet. It's William Blake. William Blake. Yes. Why William Blake? Because it's the language which he uses is very simple, and he talks about the downtrodden people of the society, and he Mhm. criticizes the injustice and the cruelty which is
done by the upper class to the lower classes, and that's why I like him. Okay, what is now proved was once only imagined. A very famous quotation by William Blake. Have you heard this quotation? What is now proved was once only imagined. Once not. Okay. No, sir. So what is the name of the culmination, the publication that you have read? William Blake's publications. How many total publications or culminations of William Blake you have read so far? Mainly, I have read his Songs of Innocence and Experience. Oh, that's great. So what is the significance of the title, Songs of Innocence and Experience? So actually, he talks about the two contrary states of the human life, that is of childhood and the adulthood. So, What is the purpose of writing this book? Like, was there any purpose behind writing the Songs of Innocence and Experience? so it can be said that he wanted to highlight that how the man, when he comes in this world, so he is innocent and pure, but with the passage of time, he becomes very corrupt, and he So two involves in. different sides of the same coin, two different states of human soul he is Yes, trying to depict. yes, sir. All right. That the Okay, man is that's great. evil and So can goodness. you recite some lines from William Blake's poem? Sir, I can from his poem London that I wandered through each charted street where charted Thames does flow, and the And charted make Thames. and mark in every face I met, marks of I- weakness, marks of woe. Yes, in every cry of every man, in every In every infant's cry of fear, in every voice, in every forged. man, the mind. Okay, what do you mean by in every cry of every man and in every infant's cry of fear? So in this poem, basically, he is because this poem is part of the collection of songs of experience. So he is talking about the deteriorated condition of the city of the London. That Very how good. this is very. Excellent. Yes. He's talking about the crawling and the weakness of the London. Oh, yes. That's great. Okay, what is the theme of this poem, The London? So I have discussed earlier, that it talks about the deteriorated condition of the London city, and that how miserable condition is of the people who are living there. That the children, they are weeping. The condition of the What? city is. Okay, what is the tune of the poem? What is the tune of the poem of the London? Do you The tone. understand? Yeah. What do we mean by the tone when we say the tone of a poem? So it is basically the attitude of the speaker of the poem. So what is that? It is very harsh. The tone is very harsh, and it is very critical. So what is the message of the very poem? I'm sure it is conveying a message. Yes, that it is actually talking about the authorities, that how they're working, and how their that how their treatment has made this city a very a bad city, and they need to work for the betterment of the people, of the lives of the downtrodden people, and they need to mend their ways to make the life of the citizens better. All right, thank you so much, Miss Alina. It was a wonderful discussion, and we are ending the formal discussion here. Okay, sir. No, I would like to move towards the feedback section. Okay, sir. You need to partially modify the details of your hobby because Okay, sir. if you're just mentioning the post-colonial literature, that means कि आप अपने लिए उन तमाम questions को जिनको हमने पूछा था उनके लिए space open कर रहे हैं. So I think कि आप, yeah, please आप कुछ कहना चाह रहे हैं बताइए.
Yes, sir. I just particularized it that I am specifically interested in the Pakistani literature, and because I have also read other novelists apart from Hossein Hamid, that's why it was the reason that I said that Pakistani literature. Because Okay. so, In your uh, case, Miss Alini, the thing is that basically you have not covered the broader canvas. Okay, when you're talking about that you are interested in the Pakistani literature, and if they are going to ask you the questions from the post-colonial literature, then yes, sir. you cannot, stop them from asking the questions. The situation Okay, is that it happened in a lot many interviews. Whenever you're okay, mentioning any book that is from post-colonialism, you need to define the terms. So you need to read at least one or two writers. Obviously, the time is too short now, but still, yes, you can prepare just a single person. There is a very famous one, by the way, Train to Pakistan by Khushwant Singh, the very easy novel that is, you can prepare it easily. If they're going to ask you the question, is there any Indian writer that you have covered so far? So the silence should not be the answer though. Okay. In fact, when you are introducing, when you're giving your introduction, you may say that is Alina, I hail from Lahore. My qualification, I have completed my master's from Queen Mary College. And before that, my graduation is from this college. And if you're talking about my hobbies, I'm interested in books reading, and nowadays I'm reading MOCC-Smoke, the wonderful book of Mohsin Hamid. So in case they're going to ask you the questions, okay, so if you're interested in post-colonial literature, is there any author, any other book that you have completed from this genre? So if you're saying, no, I am not, I haven't read anything, so it means that this introduction and the hobby is the artificial one. Okay. So you need to okay, sir. justify the very claim that you're making there. Okay. Okay, So the spellings, like talking about the weird, the spelling was the spellings of the weird, they were wrong. Cigarette were wrong. So basic spellings. In case you do not know the spellings, maybe you can say so. Right now the spellings are not in my mind, so I'm okay, sorry. I'm afraid that I will not be able to utter to pronunciate the correct spellings. Okay. So saying a spelling that is not the spelling of that particular word, so it is going to give them the wrong impression. So in this section yes, होता sir. ये है कि mostly students जो हैं वो under pressure play कर रहे होते हैं और उन्हें basic से spellings भी भूल जाते हैं. So ये section होता ही इसीलिए है कि check करने के लिए कि वो अपने pressure को कैसे handle कर रहे हैं. अगर तो वो प्रेशराइज होंगे तो वो बेसिक से क्वेश्चंस एम्बैरेसमेंट के भूल जाएंगे, एटिकेट्स के भूल जाएंगे, सिगरेट्स के भूल जाएंगे, स्केजुअल के भूल जाएंगे, वियर्ड, लाइजान, ये सारे स्पेलिंग्स उन्हें नहीं आएंगे. ठीक है. सो आपने इन केस यू आर नॉट एबल टू गिव देम द करेक्ट स्पेलिंग्स, यू मे सिंपली रिक्वेस्ट कि अभी जो है मैं इनके स्पेलिंग्स मेरे माइंड से स्किप हो गए, सो आई वुड लाइक टू स्किप दिस पर्टिकुलर एक्टिविटी. ठीक है. और जब आप स्किप करवा देंगे, आई एम श्योर दैट दे आर गोइंग टू गिव यू द हेल्पिंग हैंड. टॉकिंग अबाउट द थर्ड सेक्शन, Okay, sir. जब हम तीसरे सेक्शन की बात करते हैं तो आप एक मिस्टेक जो है वो मैं ज़रूर आई हैव रिकमेंडेड, आई थिंक कि पिछले इंटरव्यू सेशन में भी लैंग्वेज कोड स्विचिंग का Yes, खास ख्याल रखा कीजिए कि आपसे क्वेश्चन किस लैंग्वेज में किया जाता है. गो कि इंटरव्यू में आपने इसको रखा आज ख्याल से है, बट फिर भी आई एम yes, sir. अफ्रेड कि जब हम फीडबैक सेक्शन में बात कर रहे होते हैं तो आप अनकॉन्शियसली स्विच कर रहे हैं. इसको अगर हम कंट्रोल कर सकें 10 से 15 मिनट के लिए, तो शायद ये Okay, हमें sir. प्लस पॉइंट जो है वो दे सकता है. ठीक है कि हम कोड स्विचिंग को Mhm. मेंटेन कर सकते हैं. हमारा नॉलेज जो हमारी पर्टिकुलर फील्ड है, जो कि मोहसिन हामिद है, वापसी सिद्वा है, अतिया हुसैन है, हमें एक टेक्निक इस पे काम करना है कि हमारे क्वेश्चंस इससे बाहर ना जा सकें. और इसका एक तरीके का ये हो सकता है कि जब वो आपसे बात करते हैं योर हॉबीज, तो आप स्पेसिफिकली इस चीज को जरा मेंशन कर दीजिएगा कि यू आर इंटरेस्टेड सर एक ओनली सेकंड इन रिपीट करेंगे, पाकिस्तानी दोबारा आपकी राइटर्स. वॉइस में जी जी डिस्टर्ब। जी 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 जी, श्योर श्योर. हमें इस चीज़ को कंट्रोल करना है क्योंकि हमारे पास अभी टाइम बहुत कम है, और हम जो हैं ये कंट्रोल करना चाहते हैं कि हमारे क्वेश्चंस जो हैं, जो हमारा इंटरव्यूअर है, वो हमारे क्वेश्चंस में पोस्ट कॉलोनियल लिटरेचर के अंदर ना चला जाए, पाकिस्तान की डोमेन से ना निकले. जी सो आपको इस जी बात को मेंशन करना है इन योर हॉबी कि आई लव दोज पीपल हु आर कंट्रीब्यूटिंग फ्रॉम पाकिस्तान इन इंग्लिश लिटरेचर, क्योंकि ये गिने चुने चंद लोग हैं. देयर आर फ्यू जी पीपल हु आर कंट्रीब्यूटिंग इन इंग्लिश.
So I am just interested in the literature, in those people who are contributing from Pakistan. They are from Pakistan and they are writing in English literature. ठीक है? तो इससे क्या होगा कि एक्सक्लूड हो जाएंगे ऑटोमेटिकली राइटर्स जो दूसरे हैं. अगर आप कहेंगे आई एम इंटरेस्टेड इन मोहसिन हामिद और आप ये स्टेटमेंट नहीं मेंशन कर रहे हैं, इट मींस कि अल्टीमेटली आप मोहसिन हामिद के जो हैं वो कंटेम्प्रेरीज को भी पढ़ रहे हैं, आपने फिर अहमद अली को भी पढ़ रखा है, आपने खुशवंत सिंह को भी पढ़ रखा है, आपने अमित चौधरी को भी पढ़ रखा है, आपने सलमान रुश्दी को भी पढ़ रखा है. सो इस चीज को मेंशन कर दीजिएगा कि यू आर इन लव विद दोज पीपल हु आर कंट्रीब्यूटिंग फ्रॉम पाकिस्तान एंड दे आर राइटिंग इन इंग्लिश. क्योंकि पाकिस्तान की जो ऑडियंस जो है ना, मैं आपकी बात सुनता हूँ, जो सिर्फ 2% लोग वो हैं जो कि इंग्लिश पढ़ना लिखना और समझना जानते हैं, और इन 2% लोगों के लिए अगर कोई लिख रहा है तो डेफिनेटली ही इज डूइंग समथिंग दैट मे फॉल्स इन द डेफिनेशन ऑफ द ग्रेट लिटरेचर. सो हमारे लिए तो कम से कम वही है. आप खुद देखिए आपके इलाके में कितने ऐसे लोग हैं जो उर्दू पढ़ सकते हैं और फिर इंग्लिश पढ़ सकते हैं और फिर इंग्लिश लिटरेचर पढ़ सकते हैं. ठीक है? सो ये एक जस्टिफाइड वे होगा कि हम अपने इंटरव्यू को इस डोमेन में ले आए. जी आप कुछ पूछना चाह रहे थे? जी सर, मैं कहना चाह रही हूँ कि ये जो चीज आपने बताई है कि मतलब पर्टिकुलराइज करना है कि मैं सिर्फ पाकिस्तानी में उसमें इंटरेस्टेड हूँ जो मतलब कंट्रीब्यूट कर रहे हैं पाकिस्तान से, तो नहीं ये आपने इंटरव्यू यस मेंशन कर रही है. जब हॉबी का बता रही हूँ अपनी, उस वक्त जब भी yes बता रही हूँ. yes when they are asking you about your hobby, otherwise आप मेंशन करेंगे तो ये तो एक रॉन्ग इंप्रेशन जाएगा. आप सिर्फ अपनी हॉबी के अंदर ये डिटेल्स मेंशन करेंगे कि व्हाट इज योर हॉबी. तो आप बता सकते हैं कि माय हॉबी इज I am reading those people. I am highly moved by those people who are contributing in English, but they are from Pakistan. So my hobby is reading their works, their novels and the books. और फिर उसमें अब आप जिस तरह से ये जो राइटर्स कवर किए हैं, फिर आप इनके नेम ले सकते हैं कि मैंने इनको पढ़ा है. नॉट इज आई एम कवरिंग मोहसिन हामिद. ठीक है? सो इस तरह से आप अपने इंटरव्यू को अपनी डोमेन में लेके आ सकते हैं. एंड आई एम श्योर कि वंस यू विल मेंशन ऑल दिस थिंग्स, दे आर नॉट गोइंग टू आस्क यू द क्वेश्चंस फ्रॉम द पोस्ट कॉलोनियलिज्म. ठीक है जी? सो ये चीज़ें हैं जिन्हें आप इम्प्रूव करेंगे. हम लिटरेचर में अब हम लिंग्विस्टिक्स वाले पोर्शन पर बात नहीं कर सके, बट ओवरऑल आपने काफ़ी अच्छे से हम स्पेलिंग्स वाली एक्टिविटी को अगर रिमूव कर दें, और क्योंकि मोस्ट प्रॉबेबली वो आपसे सुबह स्पेलिंग्स नहीं पूछेंगे, आपसे यही चीज़ें होंगी, आपकी क्लास टेक्निक्स और बाकी चीज़ें जो हैं, हम 68 से 70 तक जो हैं वो चले जाएंगे स्कोर के साथ जो है. बट कॉन्फिडेंस आपका जो है वो शैटर्ड हो चुका था जब हमने हॉबीज के बाद में बात की स्पेलिंग्स के बारे में. यू आर डाउन टू द बॉटम, और फिर दोबारा से आप जो हैं वो मूव ऑन हुए, फिर अप हुए. अपने कॉन्फिडेंस को जो है वो आपने एक बैलेंस वे में लेकर चलना है, और कोशिश करेंगे कि कुछ भी हो जाए आप अपने प्रेशर को अब्जॉर्ब करेंगे. ठीक है? उसमें कुछ भी नहीं होता. अगर कुछ क्वेश्चन नहीं भी आता, इजीली जो है वो स्माइलिंग फेस के साथ उसको ड्रॉप करें. लाइक आई विल हैव टू चेक द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, आई एम सॉरी, इट्स नॉट इन माय माइंड राइट नाउ. ठीक है? देखें ये कितना बेहुदा सा लगता है अगर कोई क्वेश्चन करे और हम कहते हैं सॉरी सॉरी सॉरी. लाइक यू नीड टू गिव देम एटलीस्ट सम स्पेस के दे आर ह्यूमन बीइंग्स. सो आप कह सकते हैं द प्रॉपर आंसर इज नॉट देयर इन माय माइंड, आई विल हैव टू चेक इट सर, आई एम सॉरी राइट नाउ, द आंसर इज नॉट देयर. सो इन दिस वे आप इसको इम्प्रूव कर सकते हैं. बाकी ओवरऑल इंटरव्यू आपका अच्छा था, और एंड आई एम श्योर कि जब आप सुबह का एक्सपीरियंस शेयर करेंगे तो आपके सारे के सारे क्वेश्चंस जो हैं वो वही हों जो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं दोनों मॉक्स में, पहले और एक अभी जो. जी सर. सर वो एक अगर क्वेश्चन आपका पूछना कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं. जी बताइए. सर, इसी से रिलेटेड था मेटा फिक्शन का, जैसे लास्ट टाइम आपने मुझसे पूछा था ना उससे, तो आई वाज अनएबल टू जस्टिफाई कि वो मेटा फिक्शन कैसे है. तो थोड़ी सिंपल वर्ड्स में मेटा फिक्शन की जो है वो डेफिनेशन, क्योंकि बहुत ही उसकी कॉम्प्लिकेटेड सी है, वो समझ नहीं आती है मेटा फिक्शन की जो डेफिनेशन. आपको समझ में क्या आई है ताकि उससे मैं आगे आपको समझा सकूं. हेलो मिस अलीना, यू आर देयर? आपका माइक बंद हो गया, आप अपना माइक दोबारा से ओपन कर लीजिए. अब मुझे बताइएगा मेटा फिक्शन की आपको समझ कहाँ तक आई है, क्या समझ में आया है मेटा फिक्शन का आपको? अच्छा, आई थिंक अलीना इज नॉट विद अस, बट मैं इनके क्वेश्चन को आंसर कर देता हूँ. अलीना, मेटा का मतलब होता है बियॉन्ड, ट्रांसेंडिंग. मेटा फिक्शन का मतलब ये होता है लिटरली, अगर आप इसका मतलब की बात करेंगे, दैट मीन्स बियॉन्ड फिक्शन. सो
व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट मेटा फिक्शन, आप इसको मल्टीपल वे से जो है वो डिस्क्राइब कर सकते हैं, ठीक है। अब मल्टीपल वे से आप जो है वो इतनी ज़्यादा डिटेल में मेरा ख्याल है जाने की बजाय अगर आप सिंपल लेवल पे ही इसको एक्सप्लेन कर दें कि एक ऐसा फिक्शन है जिसमें जो राइटर है, जो ऑथर है, वो सेल्फ कॉन्शियस होता है और वो रिफर करता है, एल्यूजन्स का इस्तेमाल करता है तमाम के तमाम अपने वर्क के हवाले से। मेटा का मतलब है बियॉन्ड, ठीक है, जो हमारे पास इसका मीनिंग है। सो नॉवेलिस्ट कन्वेंशन से और ट्रेडिशनल टेक्निक से हट जाता है, ठीक है, हमारे पास जो है मेटा फिक्शन में, और बियॉन्ड फिक्शन चला जाता है, ठीक है। अब मैंने आपसे जो है वो रिक्वेस्ट की कि अगर आप जो है वो माइक अपना ओपन कर सकें तो मैं ज़्यादा अच्छे से इसको बता सकूं। अदरवाइज इसके अंदर जो है मेटा फिक्शन एक ऐसी राइटिंग टेक्निक है जिसमें राइटर एक सिस्टम को फॉलो करता है, कॉन्शियसली वो क्या करता है कि वो अपनी नॉवल से जो फिक्शन जो होता है वो उसको रियलिटी की डोमेन में लेके आता है, दोनों के दरमियान रिलेशनशिप को दिखाने की कोशिश करता है, ठीक है। ये इसकी जो है वो आसान सी डेफिनेशन हो सकती है। अब मैंने आपका माइक ओपन किया है, बट आई डोंट नो कि आप जो हैं माइक क्यों नहीं ओपन कर रहे, मे बी आपके पीछे कुछ शोर है। तो अगर आपके मैंने क्वेश्चन को आंसर कर दिया वेल एंड गुड, अगर नहीं किया तो आप इसको दोबारा पूछ सकते हैं। ओह यस, यू आर देयर, या अलीना प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ, अभी आप कर लीजिए। यस सर। सर इसका सर जो नॉवल है ये बेसिकली ज्यादातर मैंने अच्छा जिसके बारे में ज्यादा पढ़ा है आसान कर लेते हैं। अच्छा, एक कोई नावल लिखा हुआ है, एक कहानी लिखी हुई है, अब वो कहानी कैसे, उसके अंदर जो करेक्टर्स हैं वो कैसे बने हैं, जब वो करेक्टर्स के ऊपर कमेंट करते हैं, जो प्लॉट उसका बना है वो कैसे बना है, ठीक है। तो जब जो है वो राइटर आपको बियॉन्ड नॉवल ले जाता है, इसके अंदर जो है वो किस तरह से, वो उसके अंदर कहानी कैसे बनी है, उसके अंदर जो वो स्टोरी वो बता रहा है, वो स्टोरी किस तरह से मूव ऑन कर रही है। सो अब जो है वो राइटर्स को टाइम एंड अगेन एक चीज का एहसास दिलाता है कि भाई आप एक कहानी पढ़ रहे हो, द कैंटरबरी टेल्स पढ़ी है ना द जेफे चौसर से, वो आपको टाइम एंड अगेन बता रहा है कि आप एक फिक्शनल वर्क को पढ़ रहे हो, आप एक फिक्शनल वर्क को पढ़ रहे हो। वो अब कैंटरबरी टेल्स को ध्यान में रखें। आप देखिए एक ऐसी फॉर्म ऑफ लिटरेचर, एक ऐसी फॉर्म ऑफ फिक्शन जो एम्फसाइज करता है अपनी ही कंस्ट्रक्टिवनेस को, अपनी कंस्ट्रक्टेडनेस को के ऊपर बात करता है, ओवर टाइम एंड अगेन आपको बताता है कि आप जो काम पढ़ रहे हो या कोई मूवी देख रहे हो ये एक फिक्शनल वर्क है। वो बताता है कि इसके कैरेक्टर्स कैसे बने, ये इसका प्लॉट कैसे बना, और वो आपको इंगेज भी रखता है। क्या मैं समझा पाया आपको आसान लफ्जों में? यस सर, क्योंकि ये ड्रामेटिक मोनोलॉग की फॉर्म में जो है ना वो लिखा हुआ है जो नॉवल है ये। जो पढ़ने वाला होता है ना उसको वो एड्रेस कर रहा होता है, एक कहानी के अंदर कहानी चल रही होती है, ठीक है। सो ये हमारे पास है, और जो करेक्टर्स होते हैं वो भी कहानी के अंदर जो हैं वो इसमें टेक पार्ट ले रहे होते हैं। अच्छा, ये हमारे पास कैंटरबरी टेल्स को आप देखेंगे तो उसमें आपको जो है वो काफी चीजें मिल जाएंगी। डॉन कोहेटे जो है वो इसकी बड़ी अच्छी एग्जांपल है। सो हम इस पे डिटेल में भी बात कर सकते हैं, लेकिन क्या आप